Good morning to you guys. So we were discussing Newton's laws of motion. As far as the things in C. Verma are given, I think I have covered almost all the things. Now, whatever I'm teaching is sort of going beyond uh, C. Verma. So I told you to हाँ the spring और weight हमें करना है अभी weight and spring I will discuss. So I told you that there are these two blocks of uh, mass m and n और मैंने क्या बोला था कि मुझे याद नहीं वेज का कितना एक्सेलरेशन है एनीबॉडी रिमेम्बर वेज का कितना एक्सेलरेशन है टू बोला था क्या अच्छा एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री we have to find the acceleration of the we have to find the acceleration of the small block, right? Yeah. So to find the acceleration of the small block, what I will do is, if you remember the sphere wala question, okay, what I will do is that I will assume that the acceleration of this m is something along the x-axis and something along the y-axis. Now, something along the y-axis, I want to assume downwards because I know that it will be coming down. I don't know whether it will be going left or right. मेरे को नहीं मालूम है. But it will be coming down, I'm sure. The y component of acceleration of the block will be downwards. ऐसा नहीं होगा कि ये अपने आप ऊपर ही चढ़ रहा होगा, right? Now you may ask that how are you coming to this conclusion that ये ax ay? Well, you see, if this wedge was fixed, then I would have been sure that the direction of acceleration is this, parallel to the surface of the wedge. But now, since the wedge itself is moving, I cannot comment on the direction of motion of the block. So I have assumed ax and ay. अगर कहीं मैंने गलती करी है तो वो कंपोनेंट जीरो आ जाएगा. There is, right? I mean, there is no harm. If you are unsure, there is no harm in assuming the acceleration to be having components ax and ay. As an alternate, you can choose any xy axis. I have chosen the horizontal vertical xy axis. You can choose any xy axis along which to find the acceleration. अगर आपका assumption गलत है, मतलब कि अगर आपने ऐसे एक्सिस पे एक्सेलरेशन अज्यूम किया जहां नहीं हो रहा है तो आपका आंसर जीरो आता है. Okay, and then what did I tell you last time? I told you that you simply draw 2 points, one on the surface 1, okay, which are in contact with each other, and another on the surface 2, which are in contact with each other.
and then you join the line, you make a line joining these 2 points. And then you draw a line parallel to this, and then you simply draw the acceleration of both the objects on this line, separately, of course. So this is AX, this is AY, and this is 2 meter per second square. And then you find the components of acceleration, right? So with the vertical, this is 2, and I want the normal reaction, remember, makes an angle which is the same as the incline with the vertical, right? तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल 60 डिग्रीज हो जाएगा, ये वाला एंगल 30 डिग्रीज हो जाएगा. So this component will be 2 cosine 60 degrees. This component will be AY cosine 60 degrees, 30 degrees. And this component will be AX cosine 60 degrees. Please notice that I'm only interested in the components of acceleration along the yellow line. There are components of acceleration perpendicular to the yellow line, but we are not bothered with that. Now, the acceleration along the yellow line should be equal for both the blocks if they are in contact with each other, right? तो सन्ना मतलब कब तक क्वेश्चन पूछेगा तो सन्ना ये 2 cosine 60 degrees नहीं खुशी गलत नहीं है हार्दिक कब तक क्वेश्चन पूछा जाएगा मुझे नहीं समझ में आता है भाइयों और बहनों कृपया आप लोग याद रखें अगर ये एंगल थीटा है और ये नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन है ये एंगल 90 डिग्री होगा और अगर ये वर्टिकल है ये एंगल 90 डिग्री होगा दिस एंगल विल बी 90 minus theta. Okay? Therefore, this angle will be theta, and therefore this angle will be. याद है मैंने बताया था मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंगल ऑफ नॉर्मल रिएक्शन with vertical is the same as angle of inclined plane. इसका मैंने 2 तरीके से प्रूफ बताया था एक ये रहा प्रूफ this is one proof. The other proof is that I know that this is 90 degrees. So if this angle is 90 minus theta, and this angle is 90, then this angle should also be theta. और कोई तरीके से प्रूफ बताऊं या ये कन्विंसिंग इनफ है हार्दिक प्रसन्ना बोलो भाई so this is something
Yes, this is something which you will keep on forgetting, so you have to keep on asking, and I will keep on telling again and again, right? This is something which is uh, going to come, or you are going to remember these things through practice. तो इसको जो है बहुत अच्छे से याद रखना है. Angle of normal reaction with vertical is same as the angle of the inclined plane. यहाँ पे येलो लाइन नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन है. अगर मैं कहीं पे भी वर्टिकल लाइन बना दूंगा तो ये एंगल वही होएगा जो इंक्लाइन प्लेन का है, ये एंगल वही होएगा जो इंक्लाइन प्लेन का है. तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल बना दूंगा तो ये एंगल 90 माइनस हो जाएगा, ये एंगल 90 माइनस हो जाएगा. यू सी, ए वाई इज वर्टिकल तो उसका एंगल 30 डिग्रीज है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है उनका एक्सेलरेशन 60 डिग्री. अच्छा, नाम भी होता है क्या मनीष? आई डिड नॉट नो. ओके, वेरी नाइस. सो दिस इज कॉल्ड alternate exterior angle. So this will be equal to how much? This will be equal to ay cosine 30 degrees minus ax cosine 60 degrees. 1 is equal to root 3 ay by 2 minus ax by 2. So I can write this as root 3 ay minus ax is equal to 2. Right? So we have found a relationship between x and y, but unfortunately, our our uh, calculation is only giving us one equation, and there is no way that using this one equation I can find the relationship between the I can find the values of ax and ay. Right? Remember, दो वेरिएबल अगर हैं तो दो इक्वेशन चाहिए. तो ये दूसरे इक्वेशन के लिए what I will do is I will apply the second law. So applying the second law. So to apply the second law, I simply draw the two objects. हाँ नहीं, हर एक फर्क पड़ेगा ना. Please see very carefully. जब हार्दिक का क्वेश्चन है कि अगर मैंने ax cos 60 माइनस ay cos 30 कर दिया तो कोई फर्क पड़ेगा? The answer is हाँ, फर्क पड़ेगा, because जब जो हमने last time, if you remember what we discussed, what was the operating principle? The operating principle was that the acceleration of two surfaces in contact with each other perpendicular to surfaces is same. Right? थोड़ा सा माउथफुल है, थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट है, but so you have two surfaces which are moving such that they are always in contact with each other. Right? You have two surfaces which are moving, which are always in contact with each other. So if this is the case, then the acceleration of the objects which have these two surfaces in a direction perpendicular to the two surfaces will be the same. So basically what I'm trying to say, or basically what the statement is trying to say, is that
the components of acceleration of the two objects, the wedge and the block, along the yellow line must be same. Now acceleration is a vector quantity, right? So कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने ax ay उल्टा ले लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So acceleration is a vector quantity, right? That means that not only must magnitude be same but also direction should be same. तो जो मैंने component लिया 2 का 2 cos 60 degrees, उसका एक particular direction है. तो ये जो ax ay के दो components आने वाले हैं, इनका जो भी net, जो भी येलो लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट्स का सम होएगा वो 2 cos 60 के ही डायरेक्शन में होना चाहिए. Not only must its magnitude be 2 cos 60, but its direction must also be 2 cos 60, right? So please do not create confusion in your mind. आपको क्या करना है, दो सरफेसेस अगर कांटेक्ट में मूव कर रहे हैं तो दोनों सरफेसेस पे एक एक डॉट बनाना है. उन दो डॉट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है. वो स्ट्रेट लाइन के पैरेलल एक और स्ट्रेट लाइन बनानी है. ये जो आपने दूसरी स्ट्रेट लाइन बनाई, इस पे दोनों के एक्सेलरेशन वेक्टर्स बना देने हैं और इन एक्सेलरेशन वेक्टर्स का कंपोनेंट ले लेना है और इन कंपोनेंट्स को इक्वेट कर देना है. राइट. अब क्वेश्चन ये आएगा कि अगर मैंने ए वाई ऊपर ले लिया होता तो क्या होता. अगर मैंने ए वाई ऊपर ले लिया होता तो ये ए वाई cos 30 जो मैंने लिखा है ये भी ऊपर आ गया होता. तो नेट एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट का ax cos 60 प्लस ay cos 30 ऊपर की तरफ आ गया होता. उस केस में मैं लिखता 2 cos 60 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में ax cosine 60 plus ay cosine 30 bracket closed, right? And I'll give you, मैं यहाँ पे मैं वो बना भी देता हूँ. अगर मैंने अज्यूम किया होता कि इसका एक्सेलरेशन ay ऊपर है और ax ऐसे, तो ये तो 2 cosine 60 आ ही गया और यहाँ पे आएगा मेरे पास जो भी टर्म्स आएंगे. तो अब मैं लिखता 2 cosine 60 degrees is equal to minus ax cosine 60 degrees plus ay cosine 30 degrees. Right? This would be the relation. So not only must the magnitudes be equal, but the direction must also be the same. इसलिए मेरे को माइनस साइन लगाना पड़ा वहाँ. अगर ax ay आपने इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ये किया है वैसे ही करना पड़ेगा. कंपोनेंट्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट्स. व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट्स. वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट्स का मतलब ही नहीं है. वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट्स तो आप तब कंसिडर करोगे ना जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस लिया जाए. Okay, so now what I've done is I've drawn the horizontal vertical axis. I've drawn the free body diagram. I've drawn the horizontal vertical axis. Remember, इसका acceleration
टू है ना इधर, और इसका एक्सेलरेशन इधर ax है और इधर ay. Please notice, never ever draw the acceleration on the FBD. Never. बाजू में ड्रॉ करना. इसके बाद से ये एंगल थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, n cos थीटा हो जाएगा, ये n sin थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, n sin थीटा हो जाएगा, n cosine थीटा हो जाएगा. Theta is 30 degrees. So along x-axis मैं इसमें इक्वेशन लिखूंगा n sin theta is equal to max. हाँ, और यहाँ पे along x-axis मैं इक्वेशन लिखूंगा n sin theta is equal to ma और 2 into m into a. लेकिन ये n sin थीटा और ये n sin थीटा तो इक्वल है, ये m और ये m इक्वल है. इसका मतलब ये हुआ that ax must be equal to ax must be equal to 2. Now I already know that. नहीं बेटा सेम है ना विश्वजीत, मैंने m और m ही तो लिखा था ना दोनों का मास. अब ax is equal to 2 अगर है तो √3ay will be equal to 4. ay will be equal to 4 by √3 meter per second. So ax is equal to this, ay is equal to this. सर आप पहले इक्वेशन पे में जाएंगे. अब हाँ सर, वहाँ पे आपने √3ay माइनस ax लिखा है. व्हाट इफ हाँ, अगर मैं साइन चेंज कर देता उसका, तो साइन कैसे चेंज कर रहे हो? सर आखिरकार हम लोग दोनों एक्सेलरेशन आई थिंक सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं ना. हाँ, हम लोग दोनों एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं ना. धाधुंध थोड़ी ना कर रहे हैं. ये 2 cos 60 की क्या डायरेक्शन है? अच्छा, टू वर्ड्स कर रहे हैं. हाँ ओके, हाँ समझ गया. Right, so this is definitely a very weird problem, but this is how you solve it. I hope this is understood. So I could not solve it just by using the constraint equation. It was not possible. I had to apply the second law to get the second relation, that ax is equal to a, and once I got ax is equal to a, ax is equal to 2, then finding ay was easy. Chalo. So again, I'll give you a problem. Wedge constraint also applies to velocity. Okay? Velocity पे भी apply होता है ये. So all of you, without exception, please do this.
Remember, whenever I use the shaded sort of thing, means that these things are fixed, cannot be moved. चलो ये वाला क्वेश्चन करो, प्लीज सॉल्व दिस.
सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इसलिए किया है क्योंकि मुझे जो एक्सेलरेशन चाहिए वो इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, क्योंकि जो वेज है उसका भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। ये दोनों ब्लू वेक्टर जो मैंने बनाया है, नीचे वाला ब्लू वेक्टर रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज along the yellow line, and ऊपर वाला blue vector represents the acceleration of the block along the yellow line, and these two vectors must be equal. These two vectors must be equal. अगर ये दोनों वेक्टर को इक्वेट करना है तो this blue vector is composed of this ay cos 30 and ax cos 60. Blue vector is a combination of ay cos 30 and ax cos 60. Right? तो ब्लू वेक्टर क्या हो जाएगा? ay cos 30 minus ax cos 60. आया समझ में आकाश? किसमें शिवेन? आंसर किसमें? इसमें आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ m1 m2 and थीटा। तीन ही चीजें तो गिवन है ना, तीन ही चीजें शोन है ना आपको ये प्रॉब्लम में। यस राधिका। हाँ, वो जो दो रेक्टेंगल बने हैं दे आर वर्टिकल वॉल्स, फिक्स्ड वॉल्स, जिसके थ्रू m2 मूव कर रहा है। therefore it can only therefore it can only move, but
Therefore M2 can only move vertically. लिखा है ना मैंने? M2 is a cylinder which can move only vertically. हाँ बात लग रहा है. Okay, so I will solve this and compare your solution to mine, how far you got, and what are the steps that you are missing, where you are facing an obstacle. Try to identify and try to correct. So if I'm given a question like this, where the key words that I take away are find acceleration. फाइंड एक्सेलरेशन मतलब कि मेरे को न्यूटन्स लॉज लगाने हैं. So the first thing that I will do is I will make a replica of the two objects which are movable, which are given in the problem, and I will make the FBD. So for this cylinder with the weird cutout surface, Earth is applying a force of M2G. The wedge surface of the wedge is applying a normal reaction. The vertical wall is applying a normal reaction. And the other vertical wall is applying a normal reaction for which I do not know the values. For the wedge, the earth is applying force. The cylinder applies the equal and opposite normal reaction. And the floor is applying some normal reaction. Once I've drawn the free body diagram, I come back to the problem and I try to figure out the acceleration. Okay, I try to figure out the direction of acceleration. Is the direction of acceleration same? Is the direction of acceleration known to me? Is the direction of acceleration unknown to me? For example, in pulley mass systems, it was always known the direction of acceleration has to be vertical or horizontal or tedha, depending on if the block is on the inclined plane. So pulley block systems, the acceleration, the direction of acceleration was pretty straightforward. So here, what can you tell me about the direction of acceleration of M1? What can you tell me about the direction of acceleration of M1? हाँ, लेफ्ट राइट तो अपन नहीं बोल सकते कि लेफ्ट होगा या राइट, एक्चुअली बोल सकते हैं, बट हॉरिजॉन्टल होगा ये बिल्कुल सही है, राइट? अनीश, अपवर्ड कैसे होगा मेरे को नहीं मालूम. Can you tell me how you arrived at the conclusion that the wedge will move upwards? Or will it move only horizontally? Yeah. So I will assume then that the acceleration of this M1 is A1 like this. What about M2? Well, it is given in the problem.
M2 is a cylinder which can only move vertically. So I will assume that the acceleration of this is vertically A2. I don't know the value. Right? Please notice, first step FBD बना दिया. कुछ सोचा भी नहीं मैंने FBD बनाने में. FBD बना दिया. You can't have an answer, Satyam, where you are giving me an unknown. You cannot have an answer which contains an unknown. It's like me asking what your name is and you say my name is X. So that does not give me any information. Okay? सत्य समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. आपके आंसर में AX, AY ये सारी चीजें N ये सारी चीजें नहीं रह सकती. नहीं अभिजीत गलत. In the first diagram क्या बोला? हाँ ये इक्विलिब्रियम वाली बात बाद में सोचेंगे. पहले मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिए. Right? And this is how you are going to solve all questions. So the first step is to draw the free body diagram. ठीक है ना? अगर पुली ब्लॉक सिस्टम्स हैं तो पहला स्टेप टेंशन लिखना हो जाता है. पुली ब्लॉक सिस्टम में एफबीडी उतना मैटर नहीं करता है. पुली ब्लॉक सिस्टम में एफबीडी उतना मैटर नहीं करता है. ठीक है ना? अरे पहले मेरी बात सुन लो भाई. पहले अभी रुक जाओ. मेरी बात पहले सुन लो. प्रसन्ना मैं बोल रहा हूँ ना कि पहले रुक जाओ. Just wait. Let me say something. Then you type. So the first step is to draw the FBT. In pulley block systems, I told you that the first step is to draw or designate the tension and various strength. In pulley block systems, FBD are not really important because almost all the blocks will be experiencing two forces, tension and mg. If the block is kept on a surface, then it may be additionally experiencing a normal reaction, but in most cases that normal reaction is not going to play an active role, right? So therefore FBD बनाने के लिए मैंने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डाला. टेक्निकली ऑफ कोर्स पुली ब्लॉक सिस्टम में भी हमें FBD बनाना चाहिए. Okay, but it is not very necessary, so I will not stress on this. But in other problems FBD बनाना हमेशा पहला स्टेप होना चाहिए. First step, draw the FBD. Don't think anything, draw the FBD. Second step, look at the question and ask yourself whether the acceleration of these objects is given or not. Direction of the acceleration of the objects is visible or not. If you cannot work out the direction of acceleration by visual inspection, then you have to write the acceleration of the object as ax along the x-axis, ay along the y-axis, and this x and y-axis you can choose any which way you want, but the best way would be horizontal and vertical, right? So I have drawn the free body diagram, and when I look at the problem, I have figured out that the wedge will be moving horizontally and the cylinder will be moving vertically. है ना? ये मेरे डायग्राम को भाई इतना बुरा ना मानना, ये इसको टच कर रहा है ना? So I go back to my FBD. Separate from the FBD, I write down the acceleration that I have assumed. Okay. A1 and A2. Now,
जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मैंने अज्यूम किया है उसी डायरेक्शन में हमको एक्सिस लेना है, एंड देन आई हैव टू फाइंड द कंपोनेंट्स। ये एंगल थीटा होएगा, ये एंगल थीटा होएगा। So this will be equal to n sine theta, and this will be equal to n cos theta, and this will be equal to n sine theta, and this will be equal to n cos theta. Now here I'm only interested along the y-axis. Here I'm only interested along the x-axis. Why is this? Well, in this situation, along the x-axis, there are two unknown forces, N1 and N2, which I'm not interested in finding. And in the second diagram, along the vertical, there is an unknown force, N3, which I'm not interested in finding. So I write down the motion along y-axis, which is M2G minus N cosine theta is equal to M2A2. And along the x-axis here we get n sine theta is equal to m1a1. After I have done this, if this question is a one step, or jitne steps abhi kiye humne 2 step, if this question is an easy question, if this question is a basic level question, then this is it. This is the end. The number of unknowns will be equal to the number of equations that you have written, and you should be able to solve the equation and get the answer. But if the question is of an advanced level, okay, then the number of unknowns will exceed the number of equations. Okay. Number of equations will exceed, sorry, उल्टा बोल रहा, number of unknowns will exceed the number of equations. एंड अगर ऐसा हुआ तो आपको एक और इक्वेशन कहीं से तो वर्कआउट करनी पड़ेगी, या जितने ज्यादा वेरिएबल्स हैं उतनी इक्वेशंस वर्कआउट करनी पड़ेंगी. एंड दिस इक्वेशन, दिस एक्स्ट्रा इक्वेशंस आर ऑलवेज गोइंग टू कम फ्रॉम कंस्ट्रेंट्स. So let's count the number of variables here. Number of equations is obviously 2. So what are the variables? N is a variable, A2 is a variable, A1 is a variable. 3 वेरिएबल है मेरे पास, इक्वेशन सिर्फ 2 है. So basically I have to work out a third equation, and the third equation will come from constraints. And the way to solve this constraint, draw a dot on the first object, draw a dot on the second object, because these two objects are always moving in contact with each other. Join the two dots with a straight line, make a replica of the straight line, draw the acceleration of the two objects on the straight line. This is A1, this is A2. ये नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन है, इसलिए वर्टिकल के साथ इसका एंगल थीटा होएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल 90 माइनस थीटा होएगा. फाइंड आउट द कंपोनेंट्स ऑफ दिस एक्सेलरेशन along this yellow line, along this line that you have drawn. This will be A2 cosine theta. And equate these components, because we learned last time that if two objects are moving such that their surfaces are in contact with each other, then the acceleration components perpendicular to the surfaces for the two objects remains same, must always be same. So I get A1 sine theta is equal to A2 cosine theta, or A2 is equal to A1 tan theta.
going back to the two equations that I have written, right? The relation that I have got is A2 is equal to A1 sine theta. So I get M2G minus N cosine theta is equal to M2A1 tan theta and N sine theta is equal to M1A1. Right? This seems like pretty normal simultaneous equation. So I can rewrite this as M2G minus N की वैल्यू डाल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे M1A1 upon sin theta into cosine theta is equal to M2A1 tan theta, right? And I have to take that M2G onto the M2G onto the M1A1, sorry, on the right hand side, and I will get. I'm just going to write this. M2G is equal to. I can take A1 common. मेरे को यहाँ जगह नहीं बचेगी. I'll just do it here. I'll get M2G is equal to A1 और ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में आएगा M1 cot theta plus M2 tan theta. M1 cot theta plus M2 tan theta. So A1, which is what we were supposed to find, is M2G upon M1 cot theta plus M2 tan. And now trigonometric ratios you already know and you can work out इसका और कैसे लिख सकते हैं. मैं इसको आंसर को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ. Right? Okay. Please now ask me questions. इसमें क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया. If there is anything that is not understood in this, please ask. आंसर अगर नहीं मैच हो रहा है तो गलत किया है. We don't need to simplify further. No. सर आपने वो स्टेप बोला ना जहाँ तक आपने बोला अगर सिंपल होगा तो हो जाएगा इधर ही. हाँ सर उधर तक मैंने उधर तक सॉल्व किया सर. उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वाई एक्सिस पे चल के उधर से सेकंड इक्वेशन निकाला. तो उससे कुछ फायदा होगा क्या? नहीं फायदा होगा. नहीं होगा उससे. तो सर ऐसा हम लोग हमेशा फिर मतलब एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन यूज करें. हाँ क्योंकि आप y एक्सिस पे जाओगे तो आपके पास n3 आ जाएगा. हाँ सर n2 n3 और n1 में आया. A2 अप नहीं ले सकते हैं. ले सकते हैं मतलब A2 आप विश्वजीत आप ले लो, आंसर आ जाएगा नेगेटिव. मैंने A2 अप लिया तो फिर नेगेटिव आ रहा है माइनस AY cot theta आ रहा है. नेगेटिव आएगा आंसर, व्हिच इज ओके. How did you get to know, Prasanna, that expression are same? Prasanna, how did you get to know that expression are same? So the question being asked is, how did I know that the expressions are different? Well, I have no idea because I have no idea that they are the same. How can I conclude that they are the same? Masses are different. एंगल है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, उस पर मैं कैसे assume that two accelerations same है? I will have to assume that accelerations are different. If they are same, then in the last step, I'll get the answer. I'll get the same values for A1 and A2 if they are same.
other question? You'll be able to do these questions now. भाई अगर आंसर इसका वेरिएशन आ रहा है, इसका कैसा भी वेरिएशन आ रहा है, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट द आंसर कैन नॉट बी डिफरेंट. हाँ मैं बताता हूँ राधिका. Even if the surface didn't fit, the answer would be same. No, it would not be. No. I'll tell you why. I'll give you a reason why. If the direction we assumed is wrong, then acceleration would come out to be negative. Absolutely, yes. पिछला slide. पिछला slide. हो गया ज़ोहैब, आगे बढ़ूं मैं. नहीं तो कहीं मिस्टेक कर रहा है सत्यम, इसको फिर से देखो. चलो, so I want to prove now that I can actually get this relation. I can actually get this relation between the two accelerations without doing this constraint wala method. मतलब basically what I mean is that there is another way to arrive at the constraints. It is not very effective according to me, but you may use it. Okay? Can it not happen that the cylinder moves up and wedge moves towards right? No, it cannot. No. This cannot happen because left में that can happen. That can happen, but that requires an external force. देखो 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 विश्वजीत इधर देखो देखो. So this is the wedge and this is the cylinder. मैं और कुछ बना नहीं रहा हूँ, मैं केवल वेज और सिलेंडर बना रहा हूँ और नीचे फ्लोर बना दिया मैंने. So what I do is I make a great big red dot on this such that half the dot is on the cylinder and half the dot is on the wedge. मैंने इंक से पेंट से ऐसे डॉट बना दिया, ऐसे सर्कल बना दिया. आधा सर्कल वेज पे है, आधा सर्कल सिलेंडर पे. Now we know that the wedge is going to move towards the right. Okay? There should be no confusion about this because the question clearly states that, like I told you, I don't write anything just for the heck of it. When the system is released, right? When the system is released का मतलब ये हुआ कि हमने ग्रेविटी को अपना काम करने के लिए छोड़ दिया. ग्रेविटी क्या करेगा? ग्रेविटी m1 पे कोई इफेक्ट डाल नहीं सकता है क्योंकि m1 फ्लोर पे रखा हुआ है. ग्रेविटी m2 को नीचे खींचेगा और because m2 नीचे आएगा, therefore the wedge will go towards the right. Okay? So if the wedge and the cylinder they remain in contact with each other, I want to find what will happen to this red dot that I have drawn. Okay? To this red dot, what will happen to the red dot? Well, the wedge after some time would have moved towards the right like this.
and the cylinder would have moved down like this. Can you tell me the fate of the red dot? The cylinder would have moved down. Let me draw it in green like this, and the wedge, let me draw it in yellow, would have moved down like, would have moved to the right like this. What happened? What has happened to the red dot? Well, the red dot on the wedge always remains at that height on the wedge. So the red dot on the wedge must have traveled here. ये रहा wedge का red dot. And the red dot on the cylinder must have traveled down, और ये रहा red dot on the cylinder. Does everybody agree with this? जब ये wedge right move कर गया, तो जो red dot है, ये original मेरा red dot है. पेंट किया है ना राधिका, आधा पेंट वेज पे है, ये वेज वाला है, और बाकी का आधा पेंट सिलेंडर पे. लेकिन वेज वाला जो भी पार्ट है वो तो केवल हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, ये केवल हॉरिजॉन्टली मूव किया, और जो सिलेंडर वाला पार्ट है वो केवल वर्टिकली मूव कर सकता है, वो वर्टिकली मूव किया. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिलेंडर and this is the displacement of the wedge, right? If the red, if the lower portion of the red dot has ended up here, and if the upper portion of the red dot has ended up here, of course this constitutes a right angle triangle. This constitutes a right angle triangle for which I know that this angle is theta. How do I know this? Well, this blue line, the hypotenuse of this right angle triangle, must be along the wedge, must be along the surface of the wedge. And I know that the wedge is making an angle of theta with the horizontal. This angle theta. So therefore, I get a relation which is tan theta is equal to the displacement of the cylinder upon the displacement of the wedge. And this tells me that the displacement of the cylinder is equal to displacement of the wedge multiplied by tan theta. And if I differentiate this twice, I will get acceleration of the cylinder is equal to acceleration of the wedge into tan theta. And acceleration of the cylinder I assume to be A2, and acceleration of the wedge I assume to be A1. So A2 is equal to A1 into tan theta. Right. So this is the constraint equation. So you can also graphically work out the constraint equation. Graphically also you can work out the constraint equation, but it is tedious. Like we, the question was asked you, कहाँ से कैसे दाहिने चला गया, कैसे राइट चला गया, कैसे नीचे आ गया. You can use this, yes. You can use this, yes. It will work on all problems. All problems this will work on, yes. So if you are having trouble finding components, जो कि नहीं होना चाहिए, मैंने वेक्टर्स में आपको बताया था कि कंपोनेंट जो है वो मेन स्टे होते हैं फिजिक्स के. If you are having trouble with this, then you can go in for that
graphical wala method. So, can we use this result in other questions? Yes, we can. सर आपने ये किया है वो हर केस में वैलिड है? हाँ. Will this work on our? Yes. हाँ, tan theta is a constant. Of course, it is a constant. Yes. It is the angle of the wedge. The angle of the wedge is never changing. The angle of the wedge never changes. Tan theta is a constant. जो भी थीटा की वैल्यू है, गिवन है नहीं गिवन है, कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay. It will form always a right angle triangle if it is a very different system. No, it may not. It may not form a right angle triangle, but since most of the cases will be wedges and blocks, you will end up with right angle triangle. So try out the next question, see if you can do this. ये ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है. So this should be easy to figure out. You should be drawing the free body diagram. Then you should be looking for visual clues to the direction of acceleration. Actually, they are not really visual
M2s, they are more of a solid. ये point और ये point, they must हमेशा कांटेक्ट में रह रहे हैं। इस डायरेक्शन में एक्सलेशन सेम होना चाहिए, लेकिन ये तो फ्लोर है। फ्लोर का एक्सलेशन 0 होता है। M1 का वर्टिकल एक्सलेशन 0 होगा। M1 कैन ओनली मूव हॉरिजॉन्टली। सिमिलरली ये पॉइंट और ये पॉइंट हमेशा कांटेक्ट में है, तो ये डायरेक्शन में दोनों का एक्सलेशन सेम होना चाहिए, लेकिन वो तो वॉल है, वॉल का एक्सलेशन 0 होगा, तो M2 का हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन 0 होगा। Therefore M2 can only move downwards। फिर उसके बाद से ये पॉइंट और ये पॉइंट हमेशा कांटेक्ट में है, तो इसके अलोंग एक्सेलरेशन दोनों का सेम होना चाहिए। नाउ यू कैन वर्क दैट आउट यूजिंग ज्योमेट्री, और यू कैन वर्क इट आउट यूजिंग जो कंस्ट्रेंट का मैंने मेथड बताया। हाँ, ऐसे ही आएगा कुछ। हाँ, आया आंसर नहीं? बिल्कुल सही बैंक, एब्सोल्युटली राइट।
यस शिवेन, बिल्कुल सही। नहीं सोना, गलत। क्या हो रहा है शिवेन? क्या 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 चाहिए तुमको? हाँ आर्यन, बिल्कुल सही। एक मिनट रुक जा शिवेन, मैं बता रहा हूँ। So one equation I get this, other equation I get this. There are only two equations but three unknowns, a1, a2 and n. So draw a line like so, draw the acceleration of 1, acceleration of 2, ये एंगल थीटा होएगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होएगा, इधर आएगा a1 sin थीटा और ये आएगा a2 cos थीटा। a1 sin थीटा इज इक्वल टू a2 cos थीटा। इसका मतलब a2 इज इक्वल टू a1 tan थीटा। हाँ, दिस इज द कंस्ट्रेंट इक्वेशन। This is the constraint equation. But these set of equations are exactly the same as what? तो यही है, बिल्कुल सेम है इक्वेशन ये तो। These equations are exactly the same as the last question. Therefore, the answer must be the same as the last question. नहीं हार्दिक, आप सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. Listen to what I'm saying. I've written down all the equations. All you need to do is solve the equation, and these equations are exactly the same. They are looking exactly like the equations of the last problem. वही आया क्या शौनक? मेरे को देखा नहीं फिर ठीक से. सही है. आर्यन गलत है तो सही करो. वेदांत कॉट माइनस टैन करेगा तो प्रॉब्लम है. मेरे ख्याल से प्लस आना चाहिए. 45 डिग्री पे प्रॉब्लम हो जाएगी ना. अनीश का तो सही है. सुदीप आप एक बार देख लो. पार्थ गलत है. पार्थ लिखा क्या है यही नहीं समझ में आ रहा मुझे. आर्यन सही है. F इज इक्वल टू एम में हमेशा यूज करना है भाई. कब नहीं यूज करना है समझना. शौनक का आंसर क्या है? कहाँ सेम है शौनक? नहीं समझ में आ रहा. M2G अपॉन M2 tan x प्लस M1. तो सेम कहाँ है?
वाह, नहीं नहीं, रिजल्ट रिमेम्बर नहीं करना है भैया, रिमेम्बर नहीं करना होता है। क्यों लास्ट क्वेश्चन में क्यों नहीं यूज किया भाई? किसने बोला लास्ट क्वेश्चन में नहीं यूज किया? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? हाँ, तो एक कॉट और एक टैन है ना वहां पे राधिका। देयर इज वन कोटेंजेंट एंड वन टैंजेंट, देखो। है ना राधिका, कॉट और टैन दोनों है ना? नहीं, A1 A2 में रिलेशन यही आएगा जो मैंने लिखा है, A2 इज इक्वल टू A1 tan थीटा। चल, ओके, सो आई विल स्टॉप हियर लेक्चर। हाँ, मैं भूल गया, मैं लास्ट वाला भी नहीं भेज पाया, मैं अभी भेजता हूँ, थोड़ी देर में सब सारे भेजता हूँ। चलो, so I'll see you guys in the next class. If you are finding this difficult, don't worry about it. This is, I think, the toughest part of Newton's laws. From here on, it gets easy. Okay, so this wedge constraints is a permanent sore point with students. So don't worry about it. And from next class, the questions will be very easy as compared to what we have discussed. Chalo guys, bye bye.